Okay, so in the last class, I hope my screen is visible. I don't think so. मैंने visible नहीं किया ना शायद. Is my screen visible to you all? Yes, sir, it is. Yes, sir. Yeah. So in the last class, we have started with the topic called as the architecture of 8086. So this is the architecture diagram that we have drawn. I hope you guys remember what is the working of it. Everybody understood the concept of architecture of 8086? Everybody understood it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what happens? First, we need to calculate the physical address because that physical address is of 20 bit. So हमें CS और IP के पास से 16 bit का segment address जो कि CS के पास होगा और IP से offset address जो कि कोड का होगा, ये दोनों ले करके मेमोरी को देना पड़ेगा. मेमोरी से हम क्या ले सकते हैं? We can fetch the instruction from a location which is has an address of 20 bit, which is calculated using this particular physical address generator. Okay, so memory से जो instruction है वो आएगा आपका instruction queue के अंदर, which is the prefetch queue. Okay, from this prefetch queue, if it is an instruction, it will go into the control system. If it is a data, it will directly go into this particular execution unit. कंट्रोल सिस्टम में आने के बाद कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा वो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है. ओके, सो दैट प्रोसेस इज समथिंग कॉल्ड एज डिकोडिंग. So in order to decode it, it will go and search in a lookup table. In the lookup table, it will search for the respective opcode. On finding the opcode, it will understand what is the meaning of that opcode, what is the meaning of that instruction, and it will see what are the control signals that has to be released. So control signal release करने के बाद arithmetic and logic unit को पता चल जाता है कि उसको क्या ऑपरेशन करना है. सो अगर उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, वो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और उसको ये भी बताया जाता है कि वो डेटा कहाँ से लेगा. सो अगर वो AL AX AH BL BX BH CL CH CX या DL DH DX से लेना होगा तो वो प्रोसेसर के पास ही वो डेटा होगा और वो वहाँ से आसानी से ले सकेगा. अगर उसको मेमोरी से लेना होगा तो वो मेमोरी में वापस जाएगा. मेमोरी में डेटा सेगमेंट से अगर सेगमेंट एड्रेस उठाएगा और यहाँ से सोर्स इंडेक्स से उसका ऑफसेट एड्रेस लेगा, वहाँ से जाकर के डेटा को उठाएगा एंड वहाँ से वापस प्रीफेच क्यू से होते हुए आपका डेटा आपके एग्जीक्यूशन यूनिट के पास पहुँचेगा. सो दिस इज हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन इज बीन डन. सो द फेचिंग इज डन बाय a unit called as BIU. The execution unit does the operation of decoding and execution. EU के अंदर जो decoding है वो करता है आपका control system और EU के अंदर जो execution है वो करता है आपका arithmetic and logic unit. Is that clear? Yes. Is that clear? So that is what we have Yes, discussed sir. over here. Yeah. So हमने सारे points लिखे थे BIU के. EU हमें start करना था, मेरे ख्याल से तब time हो चुका था हमारा. So what does EU will do? The first thing that EU will do is the control system will get the instruction. कहाँ से instruction लेगा? Control जो control system वो instruction कहाँ से लेगा? Where does the control system will take the instruction from? It will take from Instruction queue. the prefetch queue, the prefetch instruction queue, right? So the control system will get the instruction from prefetch instruction queue. Okay, so that is the first step that it does. The control system then decodes the instruction. कैसे डिकोड करेगा? by searching. कहाँ पे सर्च करेगा? Lookup table. In the lookup table. Good. By searching from the lookup table. Okay, so it will search in the lookup table. Once understanding what is the meaning of that instruction, it will release the control signal. Hence, after identifying the instruction, the control system will release what it will release? Control signal. Control signals informing. किसको inform करेगा? Informing the arithmetic and logic unit
to perform the respective operations. Is that clear? Yes, sir. Okay. Next is the arithmetic and logic unit will perform the operation by taking the operands as mentioned in the instruction. तो अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि AL से डेटा लेना है या BL से लेना है या मेमोरी से लेना है तो उसके बेसिस पे AL will get the operand first and then will perform the respective operations. Is that clear? Yes, sir. And lastly, after the result is generated, the arithmetic and logic unit will update the flag register. Okay, this process is called, this entire process is called decoding and execution of the instruction, which is done by who does it? The execution unit. Is that clear? So this is the Yes, sir. complete answer that you need to write down. आपको क्या लिखना है? आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. पहले फीचर्स लिखने हैं 806 के बाद. उसके बाद आपको BU को कुछ एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपको EU को एक्सप्लेन करना है. एंड यू नीड टू फिनिश अप योर आंसर. Fine? Is that clear? Yes, sir. Yeah. Anybody has any doubts so far? Any doubts so far? No, sir. No, sir. Okay. We'll move to the next topic. कुछ तो ग्लिच आ गया है सॉफ्टवेयर में. मैं वन नोट को क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ. ओके, एक लाइन बन गई है वो वापस जा नहीं रही है. ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम. So just write down the next topic. The next topic is something which is called as flag register. So we need to understand what is the meaning of flag registers. Okay, so write down the next topic as flag register. Okay, so what is a flag register? Flag register is nothing but it is a register which will hold the status of the result. Okay, so kindly note it down. What is the meaning of flag register? It is a register which holds, what does it holds? It holds the status of the result. Okay, so जो भी result है उसका status hold करेगा आपका flag register. Is that clear? Yes, sir. The second Yes, sir. important point, just like all the register, 8086 is a 16-bit processor. इसके अंदर जितने भी register होंगे वो कितने bit के होंगे? 16 register के. इसका मतलब flag register कितने bit का होगा? 16-bit. It is a 16-bit. So just write down the next point. It is a 16-bit register. Okay. Now we'll try to draw the diagram. Okay, so diagram draw करने की कोशिश करते हैं. Flag register दिखता कैसा है? My bad, मैंने वो ले लिया marker. Yeah, so I'll just take the pen, change the color. So kindly draw this in your book as well. Okay, pretty important question. This question is important and yeah, it carries almost 10 marks. Okay, so आपको क्या करना है? इसके अंदर 16 compartments बनाने हैं. So this is 8 compartments. Okay, so this is 16 compartments. Okay, is this clear so far? Is it clear? Is it clear so far? Yes, sir. Yeah. Yes, sir.
So जो Yes, पहला sir. flag है, the first flag is something called as CF. Okay. Then we have something called as don't care. We don't care about it. उसके अंदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. Okay. It is not reserved at all. वो उसका कुछ काम नहीं है. Okay. Then we have something called as the PF flag. Then again don't care. The sequence is pretty important. Okay. So do not forget the sequence. Okay. Then we have something called as the AF. Okay. Then again don't care. Then we have something called as ZF. Then we have something called as SF. We have something called as the TF. We have IF. We have DF. We have OF. And the last one is all don't cares. So don't care, don't care, don't care, don't care. Okay. Is that clear? Yes, sir. Okay, so kindly draw this diagram. That is pretty important. The sequence is very important. Okay. So if you look closely, out of the 16-bit register that we have, okay, 16-bit flag register that we have, how many are active and how many are inactive? Just count the number and tell me the number. कितने कितने Inner active. 9 are active, so 9 are active because those are required. How many are inactive which does not have any role to play? Those are 7. 7. 7. 7 are inactive and 9 are active in nature. Okay. Out of these 9 flag, out of 9 active flag, okay, 6 flags are called as status flags. Okay, 6 flags are called as status flag because it stores the status of the result. Okay, naturally ये बना था status को hold करने के लिए, but बाद में कुछ और भी uses की वजह से इसके अंदर 3 flag ऐसे रखे गए जो कि प्रोग्रामर यूज करता है. प्रोग्रामर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और जिससे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं. So those 3 register that we have, 3 bit that we have, those 3 bit are called as the control flag. Okay. So out of the 9 active flags, 6 are status flag and 3 are control flag. Is that clear? Is that Yes, clear? sir. Okay. Now we'll try to understand all these flags. Okay. So सबसे पहला जो flag है that is called as CF. CF stand for the carry flag. Okay. So carry flag is nothing but it is a flag. CF will be made as 1 if the carry is generated out of the MSB. Okay. So what it does, if the result or if the carry is generated out of the MSB, if the carry is generated out of the MSB, then carry flag will be made as 1. Is this point clear to you? Yes, sir. Okay. Example देखेंगे समझ में आएगा उस वक्त और clear हो जाएगा. But for now, just remember it. Okay. If the carry is generated out of the MSB from the result, in that case, carry flag will be made as 1. Carry flag will be made as 0 if there is no carry generated. No carry generated. कहाँ से? From the MSB of the result. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. We'll take an example. So 25H plus 23H. Add the numbers. What you'll get as output? 5 plus 3 is 8. 48. 4. 48H. Okay. Do not forget to mention H. 25 को बाइनरी में लिखो. Do this in binary. So हर एक बिट को आप 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हो. तो 2 को कैसे लिख सकते हो आप? Come on, tell me. 0 0 1 0. 1 0. 5 को 1 कैसे लिखोगे? 0 0 1 0 0 1. 1. This 2 again 0 0 1 0. This 3 can be written down as 0 0. 001. 0 0 1 1. Okay. Now try to add these numbers. Add karo. 1 plus 1 is 0. 0. Carry. 0 carry 1. Carry 1. 1 plus 1 is 0. 0 Carry. carry 1. 0 1 plus 1 is 0. 0 Carry. 0 and 1 mark. And यहाँ पे
क्या आ जाएगा 1. 1. Okay, 1. then we have 1. 0, 0. we have 0 1 carry carry. 1, then 1 will come 1. down, And 0. 0. Is this clear? Is this Yes, clear? sir. So this is nothing but Yes. this is 4, this is nothing but this is 8, right? Are we getting the correct answer? 48 ही आना चाहिए था, 48 आ रहा है. Yes, sir. Yeah. So now look, this is your result. 8 bit को अगर आप ऐड करते हो, so 8 bit का आपका result आएगा. Okay, 8 bit का result आएगा. Along with that result, you have a carry which is also there. So ये क्या MSB से is there a carry generated out of this? क्या कोई carry generate हो रहा है from the MSB? No, sir. No. Since there is no carry generated, I can make the content of carry flag as 0. Exactly. Yes, sir. रिजल्ट में अगर मेरे MSB से कोई कैरी नहीं निकल रहा है बाहर, that means मेरा कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 0. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, We'll sir. take an example. Let's say 95 plus 94h. What is the answer? Do the calculation. 5 plus 4 is 189H. 9. No, it won't be 189 because 9 के बाद क्या आता है hexadecimal में. We are talking about hexadecimal number. 9 के बाद comes A, then comes B, then C, D, E, F. F के बाद 10, 11, 12. I guess the answer is 129. Yes, Is sir. it coming as 129? Do you guys know right ना? 9 के बाद क्या आएगा? A, B, C, D, C, E, D, E, F. F. यहाँ तक 6 हुआ और 3 ऐड करना है. F के बाद क्या आएगा? 10, 11, 12. I hope it is clear. 1112. Is that clear? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Do Yes, this sir. in binary. Do this in binary. Do the same calculation in binary. It will get more clear. So 9 को represent in 4 bit. It can be represented as 1001. 001. 5 can be represented in 4 bit. Do the calculation. 0, 1, 0, 1. This 9 is again calculated in 4 bit as 1001. 4 can be written down as 0, 1, 0, 0. Yeah, do the addition. 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 0, carry 1, Carry 1, 1. 0, 0. carry 1, 1, 0, 0. There is a Carry carry 1. generated out of the MSB, right? Right? Yes, sir. Is this clear? So can I say my carry flag will be made as 1? 1. Why? Because the carry is generated out of the MSB. MSB से ये जो MSB bit है, MSB मतलब most significant bit, यानी जो पहली bit होती है, that is something called as the MSB. Okay? So ये bit से क्या आपका carry generate हो रहा है? Yes, it is generating because 1 plus 1 is nothing but 0, and from that 1 is being generated out of it. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Yeah. So in this case, CF will be made as 1. I hope carry flag का use समझ में आ गया होगा. Yes, sir. So कोई भी रिजल्ट से रिजल्ट जो भी आएगा, कोई भी आंसर का, चाहे आप 5 plus 5 कर लो या कोई भी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से क्या कैरी फ्लैग या उस रिजल्ट से जितने भी स्टेटस फ्लैग होंगे वो चेंज हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? या we'll see the next flag. The next flag is something called as flag number 2, called as P flag, which is nothing but called as parity flag. Okay, so what is parity flag? So the content of PF will be made as 1 if the result has even number of ones. Okay, number of ones जो है वो अगर even रहेगा, in that case parity flag will be made as 1. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. And parity flag will be made as 0. When it will be made as 0? If the result has what? Odd number Odd of number 1. of ones. Odd number of ones. Is that clear? Yes, sir. Now look at the calculation, previous calculation. यहाँ पे carry flag 0 था. Can you tell me what will be the parity flag for the first numerical that we have seen? इसके लिए parity flag क्या होगा? Just look at the 8-bit result. 8-bit result में number of ones क्या है? Number of ones क्या है? 2 है. 2 is nothing but it is 2 even or odd. Even. 2 is even. So since it is even, parity flag will be made as 1. Is that clear? Yes, sir.
Yeah. What about this case? Tell me the parity flag for this particular result. 0. So it is again 3. 3 है. Don't look at the carry, just look at the 8-bit result. So 1, 2, Yes. 3. तो 3 bit है तो 3 odd है तो odd है तो parity flag will be made as 0. 0. Always remember odd O, so that is why PF is nothing but 0. Okay, so relate 0 with odd. Is that clear? Just in case if you're getting confused. Fine? Yes, sir. Is parity flag clear to you? Yes, sir. Yeah. Then we have third flag, which is called as AF, which is nothing but auxiliary carry flag. Okay, auxiliary carry flag. Okay, so what is auxiliary carry flag? It is so AF will be made as 1 if the carry is generated out of the lower nibble to higher nibble. Is that clear? So what is a nibble? We need to understand what is a nibble. So what is the meaning of a byte? What is the meaning of a byte? Byte का मतलब? Am I audible to you all? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So tell me, what is a byte? Byte means how many bits? A byte means how many bits? 8 bit. 8 bits. So 1 byte is equal to 8 bit. Was that difficult? Was that a difficult question? अभी तक तो No, पढ़ रहे हैं ना भाई हम लोग. So it is pretty simple. So एक byte का मतलब होता है 8 bit. Okay. So the term byte came because we a human being takes a bite. Okay, we take a bite of food. Okay. जो child होते हैं, they take a nibble of food. Nibble. They nibble. Rat nibbles. A child nibbles. Okay. मतलब उनका जो bite होता है वो छोटा होता है. Okay. So a single nibble means 4 bit of binary digit. 4 bit को एक nibble बोलते हैं. Is that clear? Is that clear? yes. Yes, sir. So byte is equal to 8 bit because it is bigger, and a nibble is equal to 4 bit. Okay, so what we wanted to say is if the carry is generated out of the lower nibble, यानी lower 4 bit से अगर carry generate हो रहा है, यहाँ से अगर कोई carry generate हो रहा है यहाँ के लिए, in that case auxiliary carry flag will be made as what? 1. Is that clear? Lower nibble से higher nibble में अगर कोई carry जान रहा है तो auxiliary carry flag क्या बन जाएगा? 1. Is that clear? Yes, sir. So can you tell me in this case what will be the answer? Auxiliary carry flag. कोई carry जा रहा है? Lower nibble से higher nibble? No, sir. No. So 1 आ रहा है, 1 ही आंसर है. There is no carry. So auxiliary carry flag will be made as 0 in this case. 0. Is that clear? Is that Yes, clear? sir. What about this case? Look at the lower nibble से higher nibble. मतलब ये वाला bit. AF will be 1. AF will be? 1. AF will be 0 plus 0. नहीं 1 कैसे होगा? Sir, कोई sorry, carry जा रहा है? सर मैं नीचे वाले को बोल दिया. नीचे में भी Sorry. 0 होगा. दोनों केसेस में 0 होगा. Why? Because लोअर निबल जो है, यानी ये जो लोअर निबल है, इस लोअर निबल से क्या कोई कैरी जनरेट हो रहा है क्या? No, sir. तो ये 1 से कोई भी कैरी नहीं निकल रहा है आपका. So there is no carry which is generated. So that means यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली इस केस में भी अगर आप देख रहे हो, so 1 plus 0 plus 0 is nothing but 1. सम 1 आ रहा है, कैरी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो सिंस कैरी ऑक्सिलरी कैरी जो है मेरा वो 0 है, तो दैट मींस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा? 0. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Clear to all of you? Yes, sir. What about others? I'm not listening to your voices. I hope it is clear to Yes, you all. sir. Yes, sir. Yes, sir. By the way, the recording has started or it is not? So it has. Okay. Fine. So is auxiliary carry flag clear to you? So AF 1 कब होगा? जब कैरी जनरेट होगा कहां से? लोअर निबल से हायर निबल के बीच में. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 कब होगा? When if there is Generate नहीं होगा. no carry generated. अगर कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, कहां से? लोअर निबल से
हायर नहीं बनता. Is that clear? Yes, sir. So that is flag number 3. We'll see flag number 4. What is flag number 4? ZF, which is nothing but zero flag. Okay. So the content of zero flag will be made as 0. We'll make it as 1. 1 se start karte hain. That would be much better. Yeah. So zero flag will be made as 1 if the result is 0. यानी सारे के सारे बिट अगर मेरे 0 होंगे, the complete result is entire 0. Zero flag will be made as 1. Is that clear? Yes. Yes, sir. And zero flag will be made as 0 if the result is 1. non-zero. Other than 0, it would be made as zero flag will be made as 0. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में अगर मैं 8 बिट का रिजल्ट देख रहा हूं तो 8 बिट में अगर एंटायर 0 होंगे तभी मेरा जीरो फ्लैग क्या होगा? 1 बनेगा. 1 होगा. अगर इनमें से कोई भी एक बिट 1 होती है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा. Is that clear? 0. So looking at the result, can you tell me what will be the zero flag for these results? इस केस में जीरो फ्लैग क्या होगा? 0. सब 0. 0 होंगे Yes. सर. 0. Yeah. 0. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 0 होगा, right? Yes, sir. Yes, sir. So is zero flag clear to you? Is zero flag clear? Yes, sir. Yes, sir. Flag number 5. Okay. From here there is a little bit trick which is involved. अभी तक सारे flag straightforward थे. Okay. So the next flag is something which is called as sign flag. Okay. So sign flag is something. It should basically tell the sign of the number. Okay. So that is why this flag was made. Okay. So अगर 0 हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर 0 हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा? नंबर क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? Negative. No, ideally it should be positive. Okay, sign flag 0 हुआ इसका मतलब नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा. Sign flag 1 हुआ तो ideally it should what happen? It should be the number should be negative. Is that clear so far? Okay, sir. But this is not how it happens. Okay, इसके अंदर थोड़ा issue है. There is a complication which is there. Okay, so sign flag is made as 0 if the result has MSB equal to 0. Okay, so it doesn't do anything. वो MSB चेक करेगा, MSB 0 मिला रिजल्ट का तो साइन फ्लैग को 0 बना देगा. Is that clear? Is that clear? Yes. And if the result has MSB equal to 1, in that case sign flag will be made as 1. So it does what? It just simply copies the MSB. MSB मतलब जो पहली वाली जो बिट है ना, not the last one, the first one. It will just check whatever is the MSB. It will just simply copy in the sign flag. As simple as that. Is that clear? Is that clear? Yeah. So दो इसका नाम साइन फ्लैग है, बट ये एक्चुअली साइन फ्लैग नहीं बताता है. इसके लिए एक और फ्लैग की सख्त जरूरत है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट फ्लैग, व्हिच इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो फ्लैग. इज दैट क्लियर सो फार? सर साइन फ्लैग 0 फ्लैग जैसे ही काम करेगा क्या? नहीं, जीरो फ्लैग जो है वो सारे के सारे बिट को चेक करेगा. अगर सारे के सारे बिट मेरे 0 है तब जीरो फ्लैग 1 बन जाएगा. साइन फ्लैग सिर्फ एमएसबी को चेक करेगा. सो व्हाट इज द एमएसबी ऑफ दिस नंबर? जस्ट टेल मी व्हाट इज द एमएसबी दैट यू गेट ओवर हियर. MSB is what? 0? 0 ना? तो साइन फ्लैग क्या हो जाएगा? What will be the sign flag? 0. This is the MSB and this is the LSB. So don't get confused. This is the least significant bit and this is the most significant bit. Okay? So just look at the MSB and copy the MSB directly in the sign flag. So अगर MSB 0 है तो sign flag क्या हो जाएगा? 0. Clear है? Yes. इस केस में क्या Yes. होगा? साइन फ्लैग क्या होगा इस केस में? 0 होगा. 0 ही होगा. MSB यहाँ पे क्या है? 0 है. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So ideally साइन फ्लैग को मेरे को बताना था कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बताएगा. इसके लिए एक और ट्रिक है, एक और फ्लैग की मदद लगेगी जो कि हमें बताएगा एक्चुअल साइन. सो डोंट कंक्लूड just by looking at the sign flag. अगर आप डायरेक्टली कंक्लूड करोगे so there is a error which you will do. Okay, so इसके लिए कैसे साइन निकालेंगे, that conclusion
we'll do it after the next flag. Is that clear? Yes, sir. So for the time being, what does sign flag do? It just simply copies the MSB. If the MSB of the result is 0, sign flag will be 0. If the MSB of the result is 1, sign flag is 1. Is that clear? Yes, sir. Yeah. The next flag is something which is called as overflow flag. Okay. In order to understand this flag, we need to understand a number system. Okay. Number system को दोबारा revisit करने की जरूरत है. Okay. I'll quickly open a new page. मैंने क्या आपको अनसाइंड नंबर्स के बारे में बताया था, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स के बारे में बताया था आपको, नहीं ना? No, No, sir. ओके, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे साइंड एंड अनसाइंड नंबर सिस्टम्स. ओके, सो क्विकली प्लीज पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द एंटायर लेक्चर विल बी ऑन दिस. ओके, सो ये पूरा लेक्चर इसी पे जाने वाला है, और शायद आगे वाला लेक्चर भी. बट दिस पर्टिकुलर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, इससे गारंटीड आपके जो बूथ्स एल्गोरिथम जो आप आगे पढ़ोगे, या आगे जो भी न्यूमेरिकल आप करोगे इस पूरे उसमें, सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर एक गलती करते हो, इवन दो यू फॉलो एंटायर एल्गोरिथम प्रॉपरली, आप सीधा आपको लगेगा आपने 10 मार्क का सही आंसर किया है, बट दैट सिंपल सिंगल मिस्टेक दैट यू डू विल मेक श्योर कि वो 10 मार्क्स से सीधा 1 मार्क आ जाए, और 1 मार्क सिर्फ अटेम्प्ट करने का मिलेगा आपको. सो लूज स्ट्रेट 9 मार्क्स अगर आप वो गलती करते हो. सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन ऑन द नंबर सिस्टम विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. इज दैट क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन हॉल्ट मी, आई कैन वेट फॉर यू. इज दैट क्लियर? शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes. सो इट इज एंटायरली न्यू, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अब तक क्या पढ़ रहे हैं. सो ये पूरा एक नया चीज हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? सो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर या कोई भी नंबर जो है वो दो तरीके के होते हैं. वन इज समथिंग कॉल्ड एज अनसाइंड नंबर and other is called as signed numbers. Okay, what is unsigned number and signed number? Any guess? Any guess? So it will maybe unsigned means the positive one and the signed one is negative one. Yeah, so unsigned number मतलब ऐसे नंबर जिनके अंदर साइन का कोई महत्व नहीं है. So any number which is always positive, which remains positive, which cannot be negative, are those numbers which is like unsigned numbers. Is that clear? Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. just have magnitude. It won't have sign. It will have magnitude. Example, your marks cannot be in negative. Your cricket score cannot be negative. Your goal score cannot be negative. Okay, in football. Okay, your tennis score cannot be negative. So anything which is like always remain positive, which just have a magnitude, does not have sign in it, those numbers are classified as unsigned number. Is that clear? Yes, sir. If a number has sign, along with sign you have a magnitude, that number is something which is called as unsigned number. Assigned numbers. Is that clear? साइन नंबर किसको बोलेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर उस नंबर के पास साइन होगा, a sign can be positive or it can be negative, then that number will be called as sign numbers. Is that clear? Yes, sir. So for this example can be 25h, 30h, 21, etc, etc. Okay, for this the example can be plus 25h, plus 20h, minus 15h, minus 20h. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yeah. So for this now we'll see कि what are the different representation that we have. Okay, अब हम representation देखने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर signed numbers और unsigned numbers store कैसे करते हैं. Okay, so first we will start with unsigned numbers. Okay, और हम स्टार्ट करेंगे 3 बिट के unsigned numbers के साथ. तो 3 बिट के unsigned numbers क्या क्या हो सकते हैं? What are the different combinations that I can have? Just make a combination of 3 bit numbers. What will be the first 3 bit? 0, 0, 0, 0, 0. 0. What would be next combination? 0, 0, 0, 0, 1. 1. अगला वाला combination? 0. 0, 1, 0. Yeah. Say it loudly at your home. Okay. Let them know that you are studying. Okay. So next is 0, 1, 1. 1, 1. उसके बाद 1, 0, 1, 0. 0, 0. 0. Okay. Good. उसके बाद 1 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0 नहीं. 1, 0, 1. उसके बाद 1, 1, 0. 1, And 1, last is 0. 1, 1, 1. 1, 1. Okay. What is the sequence that we follow?
लास्ट वाले कॉलम को आपको 0 1 0 1 0 1 0 अल्टरनेट में करते हैं, उसके बाद आप 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 और उसके बाद 4 बार 0 4 बार 1. दैट इज हाउ यू आल्सो राइट इट. ओके, सो 3 बिट के इतने ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. No. Yes. No, sir, इतने हो सकते. No, sir. So how इतने many हो सकते- combination I can have? 2 to 3, which is equal to 8 combinations I can have, right? Yes, sir. Yes, sir. 4 Yes, बिट sir. होते तो कितने कॉम्बिनेशन होते? 16. 16. 16. So I hope you know it. Okay. So ये इतने मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए. Just try to convert into binary. Sorry, decimal. So 0 0 का मतलब क्या हो गया? We are talking about 0 number. 0. What about this number? 0 0 1 1. 1. 0 1 0. What is in binary decimal? It is 2. Good. 2. What about this number? 3. 3. What Three. about this number? 4. 4. 4. Good. What about this number? 5. What about this number? 6. 6. Six. What about this number? And 7. 7. Is this clear so far? Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर मेरे 3 बिट का अनसाइंड नंबर होगा, 3 बिट का अनसाइंड नंबर होगा, so I can have a range from where to where? 0 0 to to 7. 0 to 7. Is this clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll see how does signed number works. Okay, so अब हम signed number को देखेंगे. So unsigned number में कोई इशू नहीं है, सब चीज स्मूथली चल रहा है. Okay, no worries, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है. Okay, the issue comes when we deal with signed numbers. Okay, तो signed number का 3 बिट का combination देख लो. What is the 3 bit combination that I can have? Tell me. So same combination I'll have 0 0 0. We can have 0 0 1. We can have 0 1 0. 0 1 1 1 0 0. We can have 1 0 1 1 1 0 1 1 1. बराबर ये 3 यही combination होंगे for 3 bit number. Yes, sir. Yeah. Listen carefully, okay? From here kindly pay attention. Signed number ने क्या बोला कि हम जो number system बनाएंगे उसकी जो पहली bit होगी, the first bit is reserved for sign. If the first bit is 0, that means the number is positive. If the first bit is 1, that means the number is negative. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. And the other 2 bit will be magnitude. Pehla bit is reserved for sign. The other 2 bit is reserved for magnitude. Is that clear? Yes, sir. Yes, So sir. just look Yes, at the sir. bit and tell me. Just look at the bit and tell me whether what is the number. Is it positive 0, positive 1? What is it? Okay. So the first will be number is positive. That is for sure. What is the magnitude of this number? 0. 0. 0. Good. What about this one? Plus Plus 1. 1. Very good. What about this number? Plus 2. Plus 2. Plus Very 2. good. What about this number? Plus Plus 3. 3. Plus 3. Plus 3. Very good. What about this number? Minus 0. Minus Minus 0. 0. What about this number? minus Negative 1. Minus 1. Minus 1. What about this number? Minus 2. minus 2 Minus 2. What about this number? Minus 3. Minus 3. minus 3. Clear है? यहाँ तक clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. No response from girls. Are you guys understanding these concepts? Yes, sir. So please say it loudly if you're listening, because these numbers, like अगर आप ये नहीं समझ पाओगे, it will cause a huge problem later onwards. Okay, so I want every student to understand this concept. अगर समझ में आ रहा है तभी आगे बढ़ेंगे, वरना COA पढ़ के फायदा नहीं है. Okay, so kindly pay attention. अगर नहीं समझ में आ रहा है, we'll stay over here. 1 महीना रुकना है, 1 महीना यही समझते रहेंगे. But we'll remember, we'll understand this and then we'll go ahead. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yeah. Sir. So 3 bit के signed numbers का range क्या होगा? Can someone tell me what is the range? -3 to -3 से Plus 3. -0 से 3 तक बराबर? Is this Yes, sir. correct? Yes, sir. So if you look closely, is there a problem with this number? कुछ problem लग रहा है आपको? कुछ नजर आ रहा है? कुछ गलती है इसके अंदर? Look closely. Is there a problem which is there? Minus 0 and plus 0. Yeah. So 0 can be taken as positive 0. So this is valid. This is valid. This is valid. This is valid. Mathematics doesn't have a -0, right? We have -1, we have -2, we have -3. Correct? Yes, sir.
Maths Yes, में sir. -0 is illegal, right? We cannot have a -0. We can have a positive Yes, 0 sir. because 0 is considered as a positive value, right? Right? Yes, Right, sir. sir. Yeah. So this number system was generating a number which was illegal in maths. So that is why this number system was completely abolished. और इस number system को हमने waste करार दे दिया और इस number system को हमने फेंक दिया. We rejected this particular idea. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन नंबर जो सिस्टम थे उसको हमने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ -0. फाइन. Yes, sir. देन कम्स द नेक्स्ट नंबर सिस्टम. इस अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हाँ ठीक है पॉजिटिव नंबर तो स्टोर हो रहे थे कंप्यूटर के अंदर, नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर करें. ये जो लॉजिक था हमारा कि पहला बिट हम रिजर्व कर लेंगे साइन के लिए, वो लॉजिक गलत हो गया. तो हमने एक नया नंबर सिस्टम इन्वेंट किया एंड दैट वाज समथिंग कॉल्ड एज. हर्ड अबाउट दिस नंबर सिस्टम? हर्ड अबाउट दिस नंबर? वंस कॉम्प्लीमेंट सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? एक से आवाज आई मेरे को, बाकी लोगों से वंस कॉम्प्लीमेंट. व्हाट अबाउट वंस कॉम्प्लीमेंट? नहीं सुना है? No, sir. No, sir. ओके. सो वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर एक बना. ओके, व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट? वंस कॉम्प्लीमेंट विल डू व्हाट? I'll explain the I'll just write down the 3-bit ka combination and we'll understand what is ones complement. Okay, so what will be the 3-bit combination I can have? It will be exactly the same, which will be 3 zeros, then we have 0 0 1, we have 0 1 0 0 1 1, then we have 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Is this clear so far? Yes, sir. Now we'll understand ones complement first and then we'll come to that topic. Okay, so ones complement अगर मुझे लेना है कोई भी नंबर का, okay, so yeah, so if it is 0, इसका ones complement will be just reverse the bit. So what will be the ones complement of this number? It would be 1. 1 का ones complement क्या होगा? Just flip the bit. 1 का flip करोगे तो क्या आ जाएगा? It will be 0. 0. So अगर मैंने एक नंबर दिया 0 1 0 1 और इसको बोला मैंने इसका ones complement निकालो, so what will be the number? So 1 just 0 flip 1 0. it will be 1 0 1 0. Clear है? Is this clear? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैंने एक नंबर बोला 0 0 1 1, इसका ones complement निकालो तो what would be the number? 1 1 1 1 0 0 0. Is this clear so far? Simple? Yes, sir. Simple? हाँ, sir. कोई issue नहीं? Yes, sir. What about 1010? Do the get the ones complement of 0 this 1 number? 0 1. 0 1 0 1. 0101. 0 1 0. Pretty simple, no issues. No issues. No, sir. Yes, sir. No Yeah. issues. Fine. So सिर्फ आप bit को flip कर दोगे, that is the complement of a number. So कंप्यूटर के अंदर हमने क्या किया कि जो पॉजिटिव नंबर है या कोई भी नंबर है, अगर लेट्स से इफ दिस इज अ नंबर 0101, ओके, सो वंस कॉम्प्लीमेंट ने क्या बोला कि हमें सबसे पहले चेक करना है एमएसबी. लिसन क्लोजली, ओके. अगर एमएसबी 0 हुआ, दैट मींस वी आर श्योर द नंबर इज पॉजिटिव. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. If the number is positive, the entire value is its magnitude. Okay, the entire value is its magnitude. Is that clear? So can you Yes, tell sir. me what is this value? What is this value? 0101 is nothing but it is 5. 5. It is 5. And since we know the MSB is 0, then can we say this number is nothing but plus 5? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. 0011. Tell me what is this number? Can we Three. guarantee that this number is positive? Looking at the Yes, MSB. sir. Yes. If the MSB Yes, is sir. if the MSB is 0, the number is positive. If it is positive, that means the number is nothing but its true magnitude. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So it is nothing Yes, but plus. sir. Is this clear? Yes, sir. Is Yes, this sir. clear? Now, if this is the number, okay, if this is the number, now looking Minus at the MSB, look at the MSB. MSB is 1. That means we can conclude the sign is negative. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If the sign is negative, then this is not its true magnitude. It's one's complement its true magnitude. So get the one's complement of this number.
What it will be? 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0. 0. So this number is nothing but it's now its magnitude. So what is the magnitude? It is 6. 6. So this number Negative. that we were talking about, it was nothing but it was minus 6. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Do you want to write down the algorithm? लिखने की जरूरत है या समझ में आ गया? आ गया सर. समझ में आ गया सर. नहीं सर, आ गया सर. Okay. So yeah, tell me this number. Is it positive or negative? Positive. Positive. Just look at the MSB. MSB is the first bit. So I can guarantee say that it is a positive number. If it is 6. positive number, is it true magnitude or इसका ones complement लेना है? True magnitude. True True magnitude. Get the true magnitude. What is the true magnitude? Nothing but 6. So this number is nothing but plus 6. Is this clear? Yes, sir. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. What about this number? Tell me. Complement. So The negative. number is Negative. negative. Always say the sign first. Okay. Since the number is negative, that means this is not its true magnitude. Get its ones complement. 0, get 1, the 0, 1, 0, 0. 0. That Zero, answer is zero. minus 4. Minus 4. Since this is its now magnitude, so the answer, this number was nothing but it is minus 4. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Another. Is it fun to do? Yes, sir. 1, 1, 1, 0. Negative numbers. It is negative. Negative. If it is negative, that means it is not its true magnitude. Its ones complement is true magnitude. Negative 1. So it is Minus 0, 1. 0, 0, 1. So what is this number? Minus 1. Is this clear? Yes, sir. If Yes, I sir. ask you to find what is minus 7 in one's complement, can you do that? Yes, sir. It's a trick question, yeah. Yes, sir. कैसे Yes, करोगे? Yes, sir. First Sir, get Sir, the yeah. पहले 1, 0, 0, 0. 0 शुरू में डाल के लिखेंगे, फिर so complement first we'll लेंगे. write तो पहले आप 7 7 का लिखोगे. magnitude. तो 7 लिखोगे आप 1, 1, 1 और आप एक 0 ऐड करोगे. अब ये पॉजिटिव 7 बन चुका है, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 7 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? Complement. Get its twos complement. Complement. So Complement. what is it? 1, 0, 0, 1 0. triple 0. Okay. चेक करो क्या 1, 0, 0 एक्चुअल माइनस 7 है तो कैसे होगा? By looking at the MSB, I can say the number is negative. If the number is negative, its true magnitude is not the number itself, but its ones complement. So get the ones complement of this number. It is 0, 1, 1. 0, 1, It is 1. nothing but 7. So this number is nothing but it is minus 7. Is that clear? Yes, sir. Can you tell me what is minus 13? Do this last one and we can move to the next topic. What is minus 13? अगर ये कर लिया इसका मतलब थोड़ा आप रेडी हो चुके हो. So minus 13 निकालने के लिए आपको plus 13 निकालना पड़ेगा. What is plus 13? Tell me. 1, 1, 0, 1. 1101. 1101. Is this plus 13? Everybody? Yes, sir. Minus Zero 13 is 0, 0, 1, 0. No, it is not plus 13. Zero, It is sir. not plus 13. अगर आप देखो 1101 क्या है? It is nothing but the number is negative. बराबर ना? Since the Yes. number is negative, that means it is not its true complement. Get its ones complement. So क्या हो जाएगा? This is 0, 0, 1, 0. 1, 0, which is nothing but this number Three, is not minus 13, but this number is minus 2. Minus 2. Exactly. मतलब आप गलत नंबर को लिख रहे हो. Are you guys getting it? The importance of ones complement and two's complement and so on. Yes, sir. So that means अगर इसको मुझे Yes, पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो Zero. लगाना पड़ेगा. Now this number is plus 13. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now get Yes, minus sir. 13 for this number. Now get the minus 13 for this. 10010. Minus 13 is nothing but get that ones complement of this number is nothing but 10010. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Finally, yeah, last one. Let's say 17, minus 17. Do it for minus 17. Last. And we'll go to the next topic. Time हो चुका है वैसे मेरे ख्याल से. What is which is your next lecture right now? तो You थोड़ा ले लो आगे क्योंकि लेक्चर नहीं है अभी इसके बाद हमें. नहीं है ना? चलेगा ना? कैपेसिटी है आप लोगों का? Do you guys have capacity for sitting? Nobody is getting bored, Yes, right? sir. आधे Yes, sir. घंटे 1 घंटे की कैपेसिटी और है बस. Okay. ठीक है. बोलो minus 17 क्या होगा? So first you need to get 17. What is 17? So 10000.
1, how many zeros? नहीं सर -17 बता रहा था। तो एक जीरो ऐड करना सर पड़ेगा, राइट? 0 1 0 0 0 1. बराबर है ना, यही है ना 17? यस यस Yeah, Yes, so sir. if this is 17, minus 17 क्या होगा? Just do the flip of every bit. So 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0. 0. Is this clear? I यस hope it's clear to you all. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now, if you understood the concept of one's complement, now look at these 3-bit के combination में tell me what is its representation. Just tell me what is this number. Triple Looking at the MSB, I can say the number is positive. That is for sure. Yes, sir. If it is positive, that means its true value. This is its true Its magnitude. So magnitude. it is. What is it? Plus 0. 0 What about this one? 1 Plus 1. Plus 1. What about this one? plus 2 2 Plus 2. Plus 2. What about plus this number? 3. Plus 3. Plus So far, 3. so good. No issues. What about this number? Minus 1. It is negative. That is for sure. negative 3. अगर Negative negative 3. negative है तो इसका 2's complement 1's complement लेना पड़ेगा, यानी flip the bit. So it is 0 1 1. 0 1 1 is nothing but 0 1 1. बराबर -3 आएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, What about sir. this number? Negative I'm pretty Minus much sure 2. it is negative. Get its 2's complement. Sorry, 1's complement. Sorry, my bad. I'm repeating that word. Get its 1's complement. So क्या हो जाएगा? 0 Minus 1 0. -2. Very good. What about this number? It is also negative. That is for minus sure. 1. Minus Nice. 1. Minus 1. What about this number? 0. Negative. Minus 0. -0. But ये होता नहीं है. ये भी होता नहीं है. इसका मतलब this number system is also illegal. It is abolished. Not acceptable. Not acceptable. So ये number system भी flawed हो गया आपका, और इस number system को हमने reject कर दिया. Exactly. Clear so far? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सब flop हो गया तो फिर hit कौन सा हुआ? So the next system is 2's basically the hit, complement. which is the 2's complement. Okay. So that is the 2's complement. Okay, 2's complement numbers. Okay, so 3 bit का combination में लिख लेता हूँ same. So what are the combinations? I can have 0 0 0, we can have 0 0 1, we can have 0 1 0, we can have 0 1 1, we can have 1 0 0, we can have 1 0 1, 1 1 0, and lastly is 1 1 1. Is this clear so far? समझ गया one's complement? हाँ सर Yes, sir. Okay. Now we'll try to understand what is 2's complement. sir. Okay. So 2's complement में क्या होता है? Yeah. So what it does, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 0 1 0 1 और मैं इसका 2's complement लेने के लिए बोलूं, so there are two methods of doing it. Okay. पहला तरीका क्या है? पहले ना इस नंबर का 1's complement ले लो. So get its 1's complement. What is it? Just flip the bit. 1 0 1 0. 1 0 1 0 1 0. और इस 1's Add 1. complement के अंदर add 1. So add 1 कर दो इसके अंदर. तो क्या हो जाएगा? 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is nothing but 1. 0 plus 0 is nothing but 0. 1 plus 0 is nothing but 1. So this number is nothing but your 2's complement. Is that clear? यस सर Yes, sir. Yes, sir. एक ट्रिक ये है. दूसरा ट्रिक क्या है? वो बहुत सिंपल है जो आप यूज कर सकते हो. ओके. एंड व्हाट इज दैट ट्रिक? कोई भी नंबर है मेरे पास. ओके. ये नंबर का अगर मुझे 2's complement निकालना है, द रूल इज कॉपी द बिट टिल यू गेट द फर्स्ट 1. सो 1 नहीं मिला, कॉपी कर लो. 1 नहीं मिला, कॉपी कर लो. 1 मिल गया, अब यहां तक कॉपी करके रुक जाओ. जैसे ही पहला 1 मिल गया, इसके बाद के बिट को फ्लिप कर दो. तो फ्लिप द बिट, नेक्स्ट बिट. सो क्या आएगा? 1. क्या आएगा? 0. 0. क्या आएगा? 1. 1. ऑलवेज रिमेंबर 2's complement हमेशा आप पीछे से स्टार्ट करोगे, आगे से नहीं. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी Right. ओके. राइट साइड टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी टुवर्ड्स, मतलब उर्दू. जस्ट फॉलो द उर्दू लैंग्वेज. ओके. सो 0 0 1 1 0 1. इज दैट क्लियर? एक और मैं नंबर दे देता हूँ. 0 0 1 0 1 1 0 1. गेट इट्स 2's complement. कॉपी टिल यू गेट द फर्स्ट 1. यहाँ पे आते ही आप रुक जाओगे. आफ्टर दैट जस्ट फ्लिप द बिट. फ्लिप द बिट. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1. 1. Is this clear? Is Yes. this clear? Yes, sir. Yes, Got sir. the idea कैसे करना है? 2's complement कैसे लेना समझ Yes, में आ गया?
It is one of the favorite question in GATE as well. Okay, अगर आप IIT के या अगर MTech करना चाहोगे आगे, तो they will just give you some random number and they will ask you get the 2's complement of the following number. So it is pretty simple. आपको सिर्फ क्या करना है, just mind में पहला bit जहाँ तक आपका आता है वहाँ तक copy कर लो, आगे के bit को सारों को आपको flip करना है. So that is a shortcut method. The long cut method is get its 1's complement first and add 1 to it. So that is a long cut method. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so everybody is well aware कैसे करना है, 2's complement कैसे निकालना है. Yes, sir. Yes, sir. Now the rule applies same, exactly same as that of 1's complement. Okay, so अगर मेरे पास एक number है, okay, look at the MSB. If the MSB is 0, that means, come on, tell me what is the rule of 1's complement का rule क्या था? Positive, sir. The number is positive. If the MSB is 0, the number is positive. If the number is positive, the whole value is nothing but its true magnitude. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is nothing but your magnitude, original magnitude. अगर number positive है तो. So what is this number? This number is nothing but it is plus Plus 4. 4. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Exactly like 1's complement. Yes, sir. एक और example ले लेते हैं 0 1 0 1. The number is positive. Since it is positive, this is nothing but its true magnitude. Was it this? What Five, is this sir. number? Plus Plus 5. 5. Yeah. We'll take another example. एक example लेते हैं जो negative हो. Okay. So 1 0 1 1. Okay. If the MSB is 1, that means the number is negative for sure. Guaranteed negative number है. Right? Not its Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If it's negative number, that means this number is not its true magnitude. Its 2's complement its true magnitude. So get the number का 2's complement. This is where it change. So वहाँ पे 1's complement लेते हैं, यहाँ पे 2's complement. So get the 2's complement. So this is nothing but copy till you get the first one. After that, just flip the bit. So this 1 will become 0. This 0 will become 1. Minus This 1 will 5. become 0. So this is nothing but minus 5. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about this number? I'm pretty much sure it is negative number. Since it is negative number, get its 1's complement and that would be its true magnitude. So 2's complement One. क्या होगा? It is 1 One 1 0 1 0. 0 0, which is equal to Minus 3. minus 3. Good, very good. 1 1 1 1. Tell me what is this number? Yeah, 1 1 1 triple 1 0. Tell me what is this number? Minus 1. Minus 1. Very good. आगे समझ में यहाँ तक? Yes, sir. If I ask you to tell me what is minus 6 in 2's complement, can you tell me? Same philosophy. Get 6 first and then try to get its 2's complement. That would be minus 6. So 6 क्या होगा? What is 6? 0 1 1 0. 0 1 1 0. अगर 0 हटा देते तो क्या होता? नंबर नेगेटिव हो जाता. तो आपको एक 0 लगाना ही पड़ेगा for sure, right? Right? Yes, sir. So 0 1 1 0. 0 1 1 0 का 2's complement लो and that would be nothing but your minus 6. So get the 2's complement. 1 One, 1 zero, 1 zero, 0 zero. 0. So copy till you 1 get 1 the 0 first 1. one. And after that just flip the bit. So 0 1 So 0 1. 1 1 1 0 minus 1 तो कैसे हमें 1 समझ 0 में आया? 0 0 Sir. होगा ना? 1 triple 0. सर 1 1 0 minus 1 कैसे हुआ? I didn't understand. 1 1 0 minus 1 कैसे हुआ? Hmm. Okay, मैं वापस इस तरफ चले जाता हूँ. Yeah, so 1 1 0 yeah. So 1 1 0 का मतलब क्या हुआ? The number is negative. That is for sure by looking at the MSB. Yes, sir. If the number is negative, that means this value is not its true magnitude. इसका Yes, sir. 2's complement will be its true magnitude. So get the 2's complement. So 0 0 यहाँ पे आएगा. 1 Then this is 1 1. and after that 0 0 0. So this is not so minus 2. 2 This is minus minus 2 होगा ना? It's minus 2. My bad. किसी ने तो बोला था minus 1 तो मैंने भरोसा कर लिया. So it is minus 2. Okay? Clear? मैंने पूछा minus 6 क्या होता है? तो 6 आपने बताया क्या था? 0 1 1 0. Minus 6 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका 2's complement लिखना पड़ेगा. So get the 2's complement. Copy till you get the first one. So 0 1. अब आगे की बिट को क्या करना है? फ्लिप करना है. So ये क्या हो जाएगा? 0 और ये 0 क्या बन जाएगा? 1. So what is this minus 6? Minus 6 is nothing but 1 0 1 0. Is that clear? Yes, sir. Is it clear, everybody? Yes, sir. What is minus 9? Come on, tell me. What is 9? 1 0 0 1. 1 0 0 1. No, it is not 9. It is negative number.
सो एक 0 लगाना पड़ेगा आपको Zero, पॉजिटिव बनाने के लिए. Is that 1 clear? 0 1 1 1. So अब इसका ones 2's complement लो. Come on, take the 2's complement. Copy till you get the first 1 one. 0 1 1 1, After just flip the 1011. so 1 1 0 1 1 0 triple 1. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. आ Yes, गया sir. समझ में? What is minus 13? Yes, sir. Do it the last one. Minus 13. So 13 is nothing but 8 plus 4. 8 plus 4 is 12 0 plus 1 1 1 0 1. 0 1 0 क्या 1 करना 1 0 0 1 1 बराबर है 13 1 0 0 1 1 minus 13 के लिए इसका 2's complement लेना पड़ेगा which is copy till you get the first one. After 1 that 0 just flip 0 the bit 1. 1 0 0 1. Is this, are you getting this as the minus 13? Yes, sir. Yes, sir. 1 double Yes, 0 sir. double 1. Everybody got this? Girls, not any response from your end. Are you guys understanding? yes, sir. I'm talking about girls. Yes, sir. Okay, are you guys understanding? Yes, sir. Okay. If you understood this, come on, tell me. Look at this, and we'll after this we'll end the lecture. Okay? थोड़ा extra हो गया. Sorry for that. Now tell me. Look at the MSB. Is the number positive or negative? Positive. Positive. If it is positive, that means the number is its true magnitude. What is true magnitude of 0 0 0? 0. 0. So it is plus 0. What about this number? Is it positive or negative? Positive. That means its true magnitude is 1. 1. What about this number? Positive. Positive. 2. Its true magnitude is plus 2. Very good. What about this number? Positive 3. Positive 3. Very good so far. Now look at this number. The number is negative. If the number is negative, that means it is not stored in its exactly like this. It is stored as its 2's complement. So get the 2's complement of this number. So copy till you get the first one. After that just flip the bit. So 0 copy कर लोगे, 0 copy कर लोगे और 1. उसके बाद नंबर ही नहीं तो क्या है 100. What is 100? Negative 2. नहीं 100. ओके इसका 2's complement आपको लेना है. सो 2's complement कैसे लोगे? कॉपी टिल यू गेट द फर्स्ट वन. सो 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया. अब आगे नंबर ही नहीं है. अब यही इसका मैग्नीट्यूड हो गया. व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? 4, राइट? Yes. सो इट इज इक्वल टू minus 4. 4. Is this clear? Yes, sir. What about this number? Looking at the MSB, the number is negative. If the number is negative, get its 2's complement. So copy till you get the first one. So क्या आएगा? 1 आ गया. आगे वाले बिट को flip करना है, which is 1 1 0 0 0 0 1 1, which is equal to 3. minus 3. What about this number? It is negative for sure. If it is negative, that means the number is stored in its 2's complement. So क्या होगा? Copy till you get the first one. तो 0 1 यहाँ तक copy किया, ये वाला bit flip हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 0 1 0, which is equal to Minus 2. minus 2. What about this number? Number is negative. If the number is negative, that means it is stored in is 2's complement. So get the 2's complement. Copy till you get Minus. the -1. minus 1. Is this clear? Is this clear Yes. so far? Okay. Look Yes. at the number. Look at the number and see. कोई legal entry है इसके अंदर? 0 is very much legal. 1 is very much legal. 2 is legal. 3 is legal. 4 is legal. -4 is legal. -3 is legal. -2 is legal. -1 is legal. So it has every symbol which is legal in decimal number system. Is that clear? Yes, sir. So it is very much utilized. Kindly note down somewhere in your book. In computers, the negative number is always stored in 2's complement form. Is that clear? कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर के अंदर या कैलकुलेटर के अंदर या जहां पे भी नेगेटिव नंबर अगर आपको दिखेगा, it is always stored in its 2's complement form. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So kindly note it down. Have you noted down? Have you noted it down? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इसका रेंज निकालने की कोशिश करूं, I'll just close. सिर्फ मेरे को रेंज बता दो, फिर मैं चलते हैं यहाँ से. Okay, what is the range you are getting out of it? 3 बिट का रेंज क्या है? 3 बिट 2's complement नंबर का रेंज क्या होगा? It is ranging from where to where? 0 to Negative side में. Just start minus from 4 negative. to -4 to 0. Ba- -4 to -1 in negative side.
पॉजिटिव साइड में 0 to 3. 3. इज दिस क्लियर? Yes sir. अनसाइंड नंबर Yes, sir. कहां से कहां तक रेंज कर रहा था? 0 to 7 तक. क्लियर है? Yes Exactly. sir. Got it. Yes, sir. सो अगर मैं अनसाइंड नंबर मुझे कोई भी रेंज दिया जाए विच इज 0 to 7, और अगर मैं आपको बोलूं साइंड नंबर का रेंज क्या होगा, तो इट इज एग्जैक्टली हाफ. तो 0 to 7 इज नथिंग बट 8, राइट. साइंड नंबर में क्या होगा? Yes, उसका sir. हाफ होगा. हाफ विल बी इन द पॉजिटिव साइड एंड हाफ विल बी इन द नेगेटिव साइड, राइट. Yes sir. सो हाफ ऑफ 8 is 4. So positive side में, because we are starting from 0, it will go in from 0 to 3, because 0 is considered as a positive number. So 0 to 3. Negative side में क्या होगा? -1 से 0 से 3 से एक ज्यादा, which is -4. बराबर ना? Is that clear? Yes sir. Yeah. So that's end. That's the end. After this we'll be trying to understand for 8-bit numbers, and उससे एक range derive करेंगे, और उस रेंज के अंदर अगर आपका नंबर होगा, then we can say that the number is not overflown and overflow flag will be made as 0. अगर उस रेंज के बाहर अगर आपका रिजल्ट आता है, then we can say that the number is overflown. and अगर कोई नंबर ओवरफ्लो होता है तो उसका जो साइन फ्लैग है वो हमेशा उल्टा होता है. So that is why the whole calculation was all about. I hope you understood the number system का idea. Yes, sir. Okay. So next class में हम क्या देखेंगे? What is the range of 8-bit number? 8-bit number का एक बार पता चल जाएगा. Then we'll go back to the topic of our flag register, which is the sign flag and overflow flag. Is the number system clear to you? Yes sir. Sir, just a request. Yes, sir. Could you please upload these ये नोटपैड वाले सब नोट्स सर? मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. ये नोट पे आपको दिख रहे होंगे. ये सिंक्रोनाइज होते हैं. इट कीप्स ऑन सिंक्रोनाइजिंग ओवर हियर. ऑटोमेटिकली ये अभी फिलहाल तो सिंक्रोनाइज हो गया. थोड़ी थोड़ी देर में ये बफर होता है और वो सिंक्रोनाइज होता रहता है. आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिंक. मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ. आप लोग दोबारा उससे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं. यू कैन सी द एंटायर चैप्टर ओवर हियर. सो आप या वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेयर सो आई हैव गॉट ऑल द नोट्स ओवर हियर. ओके, इज दैट क्लियर? Okay sir. Yes, Thank sir. you. Yes, Yeah. sir. Thank you, sir. Yeah. So are these number system important? Yes, they are. When they are used, so अगर जैसे फ्यूचर में अगर आपको ऐड करना है 13 + 13, आप ऐड कर लोगे आसानी से, which is 26. क्लियर? अगर मैंने एक नंबर बोला आपको कंप्यूटर के अंदर आपको ऐड करना है 13 - 5 अगर आपको करना है, ओके, सो आप इसको भी आप एडिशन से कर सकते हो. कैसे? 13 + (-5) एंड +(-5) आपको पता है कैसे निकालना है? 2's कॉम्प्लीमेंट में निकालना है. इज दैट क्लियर? सो एक 2's कॉम्प्लीमेंट Yes, होने sir. की वजह से 2's कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से यू कैन रिड्यूस अ सर्किट व्हिच इज कॉल्ड एज सबट्रैक्टर सर्किट. एक सर्किट को कंप्लीटली आप रिमूव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई द 2's कॉम्प्लीमेंट केम इनटू पिक्चर. एक सर्किट को पूरी तरह से हटाने के लिए. सो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 × 2 करना है. सो 2 × 2 इज नथिंग बट 2 + 2, राइट? 2 × 3 करना है Yes, तो sir. क्या करोगे? 2 + 2 + 2 + 2. सो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो? मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हो, आप एडिशन ही कर रहे हो. और डिवीजन अगर आपको करना है, जैसे 6 / 2 करना है आपको, तो आप क्या करोगे? 6 में से पहले 2 को माइनस करोगे, बराबर, और फिर से वापस Yes, उसके sir. अंदर से -2 आप करोगे, एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर, राइट? सो डिवीजन में व्हाट यू डू सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. Subtraction is also nothing but it is a division, but sorry, it is a addition, but addition of a 2's complement number. Is that clear? So जहां पे भी कंप्यूटर में अगर आपको एडिशन करना है, कंप्यूटर में अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कंप्यूटर में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कंप्यूटर में अगर आपको डिवीजन करना है, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको लेट्स से स्क्वायर रूट निकालना है, कंप्यूटर के अंदर आपको टू द पावर निकालना है, ओके, x टू द पावर y अगर आपको निकालना है, ओके, कोई भी चीज अगर आपको निकालना है, आप एक सर्किट से कर सकते हो, व्हिच इज कॉल्ड एज एडर सर्किट. Addition. You won't require subtractor circuit at all because आप 2's complement use कर रहे हो, and because of this logic which is 2's complement, you can easily perform all these operations. Is that clear? So is it a powerful technique? Yes, it is a way powerful technique. It is very powerful technique. It looks simple, but it reduces the overall architecture of your computer to entirely half, and it reduces the overall cost to entirely half. Is that clear? So आज कंप्यूटर जो आप 60,000 का खरीद पा रहे हो, उसकी एक्चुअल कीमत 1,20,000 है, लेकिन इस नंबर सिस्टम की वजह से आपने 60,000 रिड्यूस किया. आज मोबाइल आप एप्पल का खरीद पा रहे हो विच इज 1,60,000 का, इट वाज सपोज टू बी, अगर वो सबट्रैक्टर होता तो डबल उसका कॉस्ट हो जाता, विच वाज 3,20,000. सो एक छोटे सा लॉजिक ने पूरे एंटायर वर्ल्ड का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया. इज दैट क्लियर?
So what you're learning Yes, is sir. something which is genius work. Okay, so please stay on time. Don't masti mat karo lecture mein, because these lectures are pretty important. Okay, it will help you, it will guide you to understand the logic of all these things. Okay, so yeah, that's all from my end. We'll meet in the next class. सर Yes. सर डिवीजन का आपने कैसे बताया, मींस ऐड करके? Yeah, so division is basically successive division. यानी अगर मैं 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, okay, 6 divided by 2 is what is your answer? You get 3, right? So आप क्या करते हो? जैसे अगर मुझे बेसिकली अगर मेरे पास 6 एप्पल है, okay, I've got 6 apples, okay, और मुझे वो 2 बंदों को देना है. So what I will do? So मैं पहले एक एप्पल इसको दूंगा, एक एप्पल इसको दूंगा, okay, तो 2 एप्पल मेरे गए. फिर एक एप्पल इसको दूंगा, एक एप्पल इसको दूंगा, वो गए. फिर एक एप्पल इसको दूंगा और एक एप्पल इसको दूंगा. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेसिकली सबट्रैक्टिंग 2 फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार मेरा सबट्रैक्ट होगा, दैट मींस आई एम इक्वली डिवाइडिंग इट. आर यू गाइस गेटिंग इट? तो 6 में से 2 बार मैं सबट्रैक्ट करूंगा, एक बार हो गया, आंसर आया 4. 4 में से 2 एक बार और सबट्रैक्ट करूंगा, आंसर आया 1. एक बार सबट्रैक्ट हो गया, 2 आ गया. अब 2 में से 2 सबट्रैक्ट करूंगा, आंसर आया 0. सो बेसिकली 3 बार सबट्रैक्शन हो रहा है, thus your answer is division is 3. Is that clear? So what Yes. you do in division is also subtraction, right? Yes sir. At the end, अगर आप broader aspect पे देखोगे, division is nothing but it is subtraction. Integration is nothing but you're adding. Differentiation is nothing but your subtraction again. बराबर? Yes sir. At the end, maths is all about addition and subtraction, not more than that. उसके अलावा कोई ऑपरेशन ही नहीं है उसके अंदर. Fine? Yes sir. Yeah. So second module, when we will be starting the second module, this entire जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, this will be whole thing will be repeated again in second module, and it is one of the fun thing to do, and guaranteed 20 से 30 मार्क का न्यूमेरिकल सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आएगा. Okay, so it is very fun thing to do. Okay, so yeah, I hope the lecture was not boring, and sorry for taking your extra time. No sir. Yeah. So do you want me to record your attendance? या attendance hold करेंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं. कोई इशू नहीं सर, चलेगा. रहने दो, अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं करो. Yes sir. ओके फाइन, चलो बाय, टेक